Okay. Good morning, girls. So today we are going to start ellipse. So before we start ellipse, we would like to understand the story of eccentricity. What is eccentricity? What was eccentricity in parabola? What was eccentricity in parabola? What is the definition of eccentricity of any 2-degree curve? What was the definition of parabola? The ratio of a moving point from a fixed point to fixed line are equal, है ना? It means the distance between the moving point and the fixed point upon the distance between the moving point and the fixed line is equal to 1. That ratio is called eccentricity. If you say your P is a moving point, right? P is your moving point, means it's on some curve, right? And then you have a fixed point. You say a fixed point, right? And then you have a fixed line. This distance with this distance, I call it M. Okay. So PF upon PM is called eccentricity. Okay. This is the definition of eccentricity. Now, you know, when the eccentricity is 1, when the eccentricity is 1, the curve which you appear, which is the curve which you get is parabola. Now, what happens when the eccentricity is between 0 to 1? What happens when the eccentricity is 0? What happens when the eccentricity gets greater than 1? When it is ellipse? Okay. And when it is hyperbola? Greater than 1. And when it would be circle? When eccentricity is 0. And when it would be pair of straight line? Huh? At infinity. See what happens. Since you know eccentricity is the ratio of moving point from a fixed point and distance from moving point from fixed line. When you see a circle, when you see a circle, you have two infinities, one at plus infinity and the other is on the left hand side, right? At those infinity, you have your directrix. You have your, where? At infinity. And both the foci is lying here at center. And the moving point is lying on the curve. So you'd say P, you call it F, PF upon PM. PF is a fixed length, that is radius, and PM is infinity. It's infinity. So what happens when I say R upon infinity? Anything finite upon infinity is 0. Anything finite? Finite doesn't matter what the finite number is. If I say 5 crore to the power 7 crore
to the power 9 crore to the power 20 crore upon infinity, it would be 0. Everything falls down to very small. Anything which can be spoken from your mouth is a finite quantity, and that finite quantity divided by infinity is 0. Okay, so this is what happens when the story of circle. Now what happens, your directrix slowly starts, you start bringing here, तो आपने directrix को finite distance पे ले आए, okay, but still you are keeping the foci closer, you are keeping the foci closer. So this circle, the circle will start behaving, you will see a deformation in circle, you will see, and the center where you have got two foci, they will split into two foci, right? And then you will get F1, D1, F2, D2, and the moving point is P. Okay. Now, which is shorter, PF or PM? PF is shorter. So the ratio would be between 0 to 1. So जैसे जैसे आप इसको close ला रहे हो क्या हो रहा है? Your circle is deforming into ellipse. You got your ellipse? Now what happens? Ellipse has been discovered. Now you are bringing more closer. You're bringing more closer, and then suddenly a situation arrives that they are at equidistant. Then what happens? They make a turn. They make a turn and they make it something like both the directrix are overlapping with each other, both the foci overlapping with each other, and then this is what you got. The eccentricity is 1, and then you got your parabola. This is how you see. This is how you see how changing the distance of directrix can do to this foci and the curve. Understood? Now when you are bringing much more closer, you are bringing more closer. Here you are that PF and PM, they are equal. In parabola, PF and PM are equal. And the moment you get something like E greater than 1, you get something like E greater than 1, your both parabola splits into hyperbola. They both split into hyperbola, and both the directrix cross the curve and come here. Okay? And your foci is at farther, focus is farther, and directrix is closer. Okay? Now what you are just increasing it. Eccentricity और बढ़ा रही हो तुम. Okay? Much greater. Then you will start observing that both the parabolas are getting closer and closer. और large बढ़ा दिया तो it will see that दोनों काफी touch करने से लगे हैं, but touch नहीं कर रहे हैं. They are just getting closer and closer and closer. And then at infinity, they behave like two straight line crossing each other, and you call it pair of straight line. So you understand what is the story of eccentricity? The story of eccentricity starts with the ratio of the moving point from the fixed point and the fixed line. And if your directrix, the fixed line, is lying at infinity, it means you are getting a curve which is called circle. Now you are bringing that directrix closer, then your circle is deforming into ellipse. And the moment you brought it with the ratio of 1, the ellipse they intermingled each other and they created parabola. And after the moment you brought directrix closer than the foci, then the ratio was greater than 1. Your parabola is split into two parabolas, which you call it hyperbola. And then you see both the directrix are lying between those two branches of two hyperbola. And then you are getting closer and closer. If you are bringing the value,
the directrix closer and closer. You are bringing the directrix closer and closer. It means both the branches would be getting closer and closer, and at infinity they are going to cross each other and they will turn out to be a pair of straight lines. So with the story of eccentricity, you started the story with circle and finished with pair of straight line. So you talk any curve in terms of eccentricity, you understand what is circle, what is ellipse, what is parabola, what is hyperbola, and what is pair of straight line. Okay. Now, understanding the same definition of eccentricity, we developed the algebraic locus of parabola. So with the same definition, we are going to see what is exactly happening in ellipse. Okay. Okay. Now, let's say this is your x-axis, right? मैं दुनिया की सारी लाइन को परपेंडिकुलर बना सकता हूँ x-axis पे. Accordingly, मैं अपने x-axis को arrangement करके. I'm calling this as my directrix, right? This as my foci, and this as one of the vertices. This as one of the vertices. Definitely E is less than 1, right? So I'm going to call this as a comma 0. One of the point on the vertex as a comma 0. So I know this distance upon this distance. This distance upon this distance should be E is to 1. PF upon PM. अगर मैं इसको AE comma 0 लिखूं, is it right? If E is less than 1, तो AE लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? If E is less than 1, तो A 0 से लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? लेफ्ट में होगा definitely. This distance is A into 1 minus E. So इसको 1 is to E is to 1 के रेशियो में लाना होगा. So what should be this point? Right? See, आप इसका रेशियो आप ऐसे लिख सकते हो A minus AE, और ये क्या लिख सकते हो A by E minus A, which will turn out to be E. समझ में आ रहा है? देखो, you can take A common, so it will become 1 minus E upon 1 minus E by E. So 1 minus E कट के E को ऊपर फेंक देगा, right? So E is a constant here, a fixed value, which could be anything from 0 to 1. So you understood that this is your directrix, x is equal to A by E, and this is your focus AE comma 0, right? So I know what is the equation of this, and similarly I can say this is F1, right? And this could be the moving point, right? Now you can argue that if this is happening on the positive x-axis, this could be happening on the negative x-axis also. So basically you will observe, or you can observe later on also this. Forget this. Let's do our algebraic locus story. How to go from geometric locus to algebraic locus? What was the step? Take the moving point as, then create all the equations. If you are able to introduce new variables, introduce, then create total number of equations, that new variables plus 1,
and then eliminate all those new variables, and then you will get an equation containing h, k and constants. Replace h by x and k by, so the equation which you get is, that would be the locus, right? Okay, and that would be your algebraic locus. I'm going to take this moving point P as h comma k, and you know that by definition Pf should be equal to E into, है ना? You know Pf upon Pm is E. That is the definition of ellipse. क्या है ellipse का definition? If the ratio of the moving point, of the distance of a moving point from a fixed point and distance of a moving point from fixed line is constant and is less than 1, or it is lying between 0 to 1, whatever language suits you, that means the ratio will always be going to be positive, so no need to say 0 to 1, you can also say that is sufficient if you say less than 1. Okay, and if the ratio is less than 1, then the curve is ellipse. So this is the definition, geometrical definition of ellipse. So geometrical definition को मैंने algebraic equations में convert कर दिया, Pf is equal to EPM. Now Pf क्या होगा? H minus AE का square right, and here I am going to write E into PM क्या होगा? A by E minus H, है ना? This is going to be a distance A by E minus H, right? Now getting rid of your square root, what should we do? Square it up. So it is going to be H minus AE का square plus K square is equal to E square upon A square upon E square plus H square minus 2AH upon E, right? Now expanding it, I'll get H square plus A square E square minus 2AEH plus K square is equal to A square plus E square H square minus 2AEH, right? E square को मैं अंदर ले गया, no problem. Okay, what all I can cancel? That's it? Or is there anything more getting cancelled? No? No. Now, this is E square H square and H square. Which is greater? H square is greater or E square H square is greater? H square is greater, because E square will definitely be between 0 to 1, right? So I'll shift on the left and I'll say 1 minus E square into H square, right? K square will remain K square, and I'll take A square E square on the right. Now I can divide the whole left hand side and right hand side by A square into 1 minus E square. So I'll get H square upon A square plus K square upon A square into 1 minus E square is equal to, right? Now replacing H by and K by, so what will be the x square upon A square plus y square upon A square into 1 minus E square is equal to, this is your equation of the general standard form of ellipse. This is the standard form of ellipse. Now when I say this is a standard form of ellipse, what is here to take
what is the point which we should take out from here? If it is x square upon a square and it is y square upon a square into 1 minus e square, so we'll see that the standard ellipse would be on the structure of x square upon positive plus y square upon positive is equal to 1. But this is not sufficient. You have to make sure that x square के नीचे जो क्या है बड़ा बनता है. x square के नीचे अगर x square के नीचे if you find the term which is lower below x square and you find another term which is below y square and then you got right side 1 and both are in plus. So if the coefficient below x square, the number below x square is greater, then only we are going to call it the standard equation of ellipse. अगर गलती से y square के नीचे बड़ा दिख रहा है तो डेफिनेटली ये स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है, डेफिनेटली ये उल्टा वाला एलिप्स होगा, ऐसा है ना, क्योंकि तुम देखो ना a स्क्वायर और a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, डेफिनेटली इसका फोकाई होगा, ये सब डिफरेंट होगा. इंस्टेड ऑफ x एक्सिस इसका फोकाई होगा, ये किस पे होगा, y एक्सिस पे होगा. सो तो फिर तब भी हम लोग सारी दुनिया के सारे एलिप्स को क्या बनाएंगे. तो अगर क्या कहते हैं, देखो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा गया x स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, यू विल गेट योर आंसर्स, राइट. लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, तो क्या करोगे, you will replace y by capital X and x by capital Y, and then you will get your standard ellipse, and then you can do the transformations which we have learned in the last class. Understood? So always try to recognize your standard ellipse. Sometimes आप इस बात पे ignore कर देते हो and then you do mistakes, right? Now this second guy, a square into 1 minus e square, a is a constant, e is a constant, so the whole story is a constant and it's a perfect square. So can't I write this whole thing as right? Okay. Now when you see this equation, x square by a square plus y square by b square is equal to 1. If I replace x by minus x, would there be any change in this equation? No. When I say there won't be any change in this equation when I am replacing this by x minus x, what does it mean? Whatever you see on the right, you will see on the, it would be symmetrical about y axis. Okay, now I am replacing y by minus y. No, any change? No. It means whatever you see on the up, you will see down. Have you seen these type of equations before? Circle, and circle was symmetrical in all the four ways. So the same way, a standard ellipse is standard circle, the circle with the center as origin. Same way this is going to be the same. जैसा right है वैसा left होगा, जैसा up है वैसा down होगा, right? So let's try to sketch it. Should I rub it off? So we got one more thing, that b square is actually equal to, now definitely this, देखो इसको ऐसे याद रखना, b square is equal to a square into 1 minus e square. At the same time you must remember that b is a smaller guy and a is a bigger guy, and bigger guy से ही 1 minus e square multiply करोगे तो smaller guy बनेगा, क्योंकि e is always less than 1, so 1 minus e square would also be less than 1. ठीक है, ये दिमाग में रखना. वो CV वाला जो फॉर्मूला NCERT में लिखा रहता है उसमें कंफ्यूज हो जाओगे. डोंट गेट कंफ्यूज, गो विद द बेसिक्स, राइट. So whenever you have to find eccentricity, see if you have to find eccentricity, you just have to see standard form में लिखने के बाद you just have to see छोटा स्क्वायर is equal to बड़ा स्क्वायर into 1 minus e square. Okay. Now trying to sketch x square by a square plus y square by b square is equal to 1. And what is b square? A square into 1 minus e square. And this is the standard hyperbola, which means a is greater than b.
ellipse, ellipse. This is a standard ellipse. Okay. Now, I know this is a comma and this is simply by replacing y by 0 I'll get this, and replacing x by 0 I'll get right. Okay, and you know this is going to be your ellipse. How did we arrive to this? You already are aware about the graph of root. रूट को स्क्वायर करोगे तो ऐसा ही बनता है ना, समझ में आ रहा है? ओके जैसे अगर आप y स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग x स्क्वायर लिख रहे हो तो y क्या हो गया, रूट डाल रहे हो ना, अंडरस्टूड? सो इट वुड बी ऑफ दिस शेप, सिंस जैसा राइट है वैसा लेफ्ट होगा, जैसा अप है वैसा डाउन होगा. ज्यादा बड़ा कर दिया गया, ठीक है? This is going to be your ellipse, right? And then you will see this is your focus, AE comma, and this is your directrix, E. And similarly, this is going to be your, and this is going to be your. Now when I say there are two directrices and then when I say there are two foci, you don't have to couple any randomly. The one, if I say this is F1, then the directrix is going to be this one. You are not going to say that this is the foci and that is the directrix. If you say this is the foci, then this should be the directrix. If you say this is the focus, then that should be the, instead of that. Okay, you are not going to cross it. Okay, they come in a pair. The fixed point and the moving and the fixed line, they come in a pair. Okay, now you understand this story? Okay, these 2 points, this guy is called axis. And which axis it is called? Major axis. This is called, and this is called minor axis. This is called major axis and that is called, and the point of intersection of axis and the curve is vertex. So this is called major vertex, major vertices. Major vertices क्या हो गया? E comma 0 and this is foci F1, F2, V1, V2, right? D1, D2. Clear? Okay. Now, and this is also an axis. So the minor axis intersecting the curve at, so I am going to call it minor vertices. 0 comma B and 0 comma minus B are the, and where these two vertices meet or intersect, I call it center. I call it center. When I call it center, definitely this minor axis and major axis turns out to be diameters. I'll give you the definition of diameter. I have already given you the definition of diameter. What was the definition I told you? You take any set of parallel chords and the midpoint, if you connect the midpoint of all that, that would turn out to be a diameter. That is the definition of diameter, not that it is passing double than radius and all, right? Don't go into that definition. Yes, one of the property of diameter that it should pass through the center, but parabola doesn't have any center. We'll explore that why parabola doesn't have any center. Okay, understood? यहाँ तो कोई doubt नहीं है? Okay. What should be the parametric form? What should be the parametric form of this ellipse?
How to go from algebraic locus to parametric locus? Huh? By introducing a parameter, you can have various ways, right? जैसे आपको बोला गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो क्या था क्या था पैरामीटर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपने पैरामीटर क्या बताया था सर्कल का? क्या? आर कॉस थीटा कॉमा, और क्या था वो एंगल? एंगल मेड बाय रेडियस एंड, तो कॉमन सेंस से बताओ यहाँ पे क्या रखना चाहिए? एक्स को और वाई को। आप ऑलरेडी सॉल्व करके कितनी बार एलिप्स निकाले थे जो मैं लिखवा रहा था? क्या होना चाहिए? एक्स को मुझे क्या रिप्लेस करना चाहिए और वाई को मुझे क्या रिप्लेस करना चाहिए? अरे एक्स खुद से करो तो याद रहेगा। एक्स को मुझे क्या लिखना चाहिए और वाई को मुझे क्या लिखना चाहिए कि इक्वेशन सेट कर जाए? एंगल के ही टर्म में बताओ। अच्छा ये नहीं होता तो क्या लिखते तुम? कॉस थीटा साइन थीटा। ये आ गया तो क्या लिखना चाहिए? यहां पे a cos थीटा लिख देना चाहिए और यहां पे b sin थीटा, तो b स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर कट जाएगा, एंड देन यू विल गेट योर इक्वेशन। सो पैरामेट्रिक फॉर्म इज गोइंग टू बी, this is going to be your parametric locus. Now whenever you write a parametric locus, you introduce a parameter. Now when you introduce a parameter, you must know what exactly that parameter is. क्या है ये parameter? What is theta here? Theta is the parameter, right? A is a constant, B is a constant, so definitely theta is the parameter. Now parameter is something which changes, we have already discussed that. Now let's say if this point, I am calling this point as a cos theta comma, इसको मैं p लिख रहा हूँ, p को मैंने क्या बोला? a cos theta comma, ये थीटा है क्या? सर्कल में तो मुझे तुरंत पता चल जा रहा था। एंगल मेड बाय this angle. If this angle is theta, then the coordinate should have been p cos theta comma p sin theta और a cos theta comma a sin, लेकिन coordinate क्या है? a cos theta comma b sin theta. So definitely this is not the story. सर्कल होता तो ये हो जाता, राइट? गौर से देखो तो ये क्या है? a cos theta comma b sin theta. अगर यहाँ पे अगर मैं ऊपर चला जाऊं तो डेफिनेटली ये होगा a cos theta comma a sin theta, मतलब वो कौन से सर्कल पे लाई कर रहा होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जो लाइन है ये क्या है? a कॉमा 0, ये है, कैन आई ड्रॉ अ सर्कल विद दिस? दिस सर्कल इज कॉल्ड मेजर ऑक्सिलरी सर्कल, मेजर ऑक्सिलरी सर्कल। ओके, जो मेजर एक्सिस के वर्टिसेस को डायमीटर लेके, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर लेके जो सर्कल आप बनाते हो वो क्या बन जाता है? मेजर ऑक्सिलरी सर्कल। नाउ इंस्टेड ऑफ लुकिंग P, आई विल टेक रिफ्लेक्शन ऑफ P ऑन दिस सर्कल। P का रिफ्लेक्शन P डैश मान लो। P का कोऑर्डिनेट क्या है? a cos थीटा कॉमा a b sin थीटा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? और ये एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? थीटा। सो दिस इज द पैरामीटर। ओके, दिस इज द पैरामीटर. So whenever someone asks you that this point is a cos 30 comma b sin 30, if I say this point is a cos 30 comma b sin 30, so so what's 30 here? It is the angle made by O with the reflection of P on the circle. हर इसका रिफ्लेक्शन देखो यहाँ पे, राइट? हर सर्कल का रिफ्लेक्शन है, राइट? एक्सेप्ट फॉर दिस
जो 0 पे है, 0 और पाई पे जो है, समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली 0 और पाई पे तो वो 0 हो जाता है, तो बी और लिखो या ए लिखो फर्क नहीं पड़ता, दैट इज वाई दे आर ऑन द सेम कर्व. अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड मेजर ऑक्सिलरी सर्कल. नाउ वन मोर सर्कल कैन बी ड्रॉन, दैट इज ए का क्या होगा इक्वेशन? Major auxiliary circle is x square plus y square is equal to a square. Now what is the equation of this smaller circle? B square. And what is this circle called? Minor auxiliary circle. So you call it minor auxiliary circle. This chord is passing through focus, and it is a focal chord, and it is also double ordinate. ये सारे डबल ऑर्डिनेट होंगे ना, सब डबल ऑर्डिनेट होंगे, राइट? लेकिन ये जो दो मैंने बनाया है ये डबल ऑर्डिनेट भी है और फोकल कॉर्ड भी है. क्या नाम कहते हैं इसको हम? व्हेन अ कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड एज वेल एज double ordinate, what do we have any name for it? Latus rectum, जो पैराबोला में पढ़ रहे थे, right? So this is your latus rectum. What should be the equation of latus rectum? कहाँ से पास कर रहा है? AE, 0 और माइनस AE, 0. तो क्या होगा इसका इक्वेशन? x is equal to AE and x is equal to minus AE. Okay. So what should be the end points? बताओ. अच्छा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ ये. What should be the end point? What should be the end point of latus rectum? This is AE, डालो इक्वेशन में, पता करो. ऐसे थोड़ी पेन चलाना पड़ता है ना, हाथ चलाना पड़ता है. इस इक्वेशन में क्या डालोगी? AE डालोगी तो B आएगा. निकालो क्या आ रहा है. निकालो जब तक मैं इसको साफ कर रहा हूं, इस डायग्राम को. वन माइनस ई स्क्वायर और बी स्क्वायर ए स्क्वायर के बीच में रिश्ता है, तो उसको वन माइनस ई स्क्वायर को रिप्लेस करो. रिप्लेस करो वन माइनस ई स्क्वायर को बी स्क्वायर ए स्क्वायर के टर्म में. बी स्क्वायर अपॉन चारों एंड पॉइंट्स निकालो. चारों एंड पॉइंट्स 1 2 3 4 चार एंड पॉइंट्स है ना, चारों एंड पॉइंट्स निकालो.
b square by a, and this would be, and this would be, and what is the length of lattice rectum? Length of lattice rectum? 2b square upon a. Excellent. So length of lattice rectum is going to be a. Equation of axis, major axis, of major axis. तुम लोग को अभी तक x axis का इक्वेशन नहीं पता है? ना डाउट क्यों है? y is equal to 0 plus 1 is equal to 2 में डाउट है, तो x axis के इक्वेशन में डाउट क्यों हो रहा है? And what should be the equation of x is equal to 0? Right. Doubt means not practicing. And parametric form should be a cos theta comma b sin theta. Understood? Okay. And ये अगर P पॉइंट है, ये अगर कोई पॉइंट है P, तो ये क्या होता है? P dash, ये P. So this angle is called theta, and P is called a cos theta comma b sin theta. Right? Okay. And this is one tangent at vertex. है ना? What should be the equation of this tangent, which is vertex, tangent at vertices? X is equal to minus a. Right? Okay. What should be the length of major axis? 2a. And what should be the length of minor axis? 2b. Should I rub it off? क्वेश्चन है? Should I have it? Yes. One student asked that how did you find that the ordinate of one of the end point of lattice rectum is going to be b square upon a, which you have successfully derived. See, you know, when you see an ellipse, this is an ellipse, this is your major axis, and this is your lattice rectum. Lattice rectum is something which is a focal chord and double ordinate as well, right? It means you will have 4 endpoints of lattice rectum.
इसका एब्सिसा मुझे पता है, इसका भी एब्सिसा मुझे पता है, इसका भी एब्सिसा मुझे पता है, और इसका भी एब्सिसा मुझे पता है, और इसका कर्व मुझे पता है. Right? So I just have to replace x by AE to get my counter ordinate. So it will become a square e square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. This and this gone. Y square is equal to b square into 1 minus e square. Now we know b square is actually equal to a square into 1 minus e square, which means 1 minus e square is nothing but b square upon a square. So I can write b square into b square upon a square, since b square is equal to a square into 1 minus e square. Common sense, knowledge from the previous derivation. So y square is b to the power 4 upon a square. So y would be equal to b square upon a. So I know this is going to be b square upon a. So definitely this is going to be a. If this is b square upon a, so definitely this is also b square upon a, and this is going to be a. And this length is twice of the ordinate, that is 2b square upon is the length of lattice rectangle. Okay? Okay, now my question is, if this point is x1 comma y1, what would be the equation of tangent? Equation of tangent at x1 comma y1. What should be the equation of tangent at x1 comma y1? हाँ, go ahead. सब लोग t is equal to 0 भूल गया ना? याद है तो बताओ ना, याद है तो. x square किससे रिप्लेस होता है? Very good. X square should be replaced by x plus x1. This is what I have been shouting. You are not studying at home. I am asking you कि you are not supposed to forget even a single word. And I repeated this story of t is equal to 0, I don't know, at least 10 to 15 times. And that is I am giving the under figure. And you are not able to, because you are not practicing. How you are going to remember it? X square to be replaced by? Y square to be replaced by? X to be replaced by? Y to be replaced by? XY to be replaced by? क्या? और ये जो रिजल्ट आया था बहुत आसानी से आया था क्या? कि पेन उठा के आया था? याद है कैसे आया था ये रिजल्ट? कैसे आया था? dy by dx निकाला था एक जनरल का, उसके बाद बहुत मेहनत करने के बाद, बैलेंस करने के बाद हमने कंपेयर किया था. उस मेहनत का रिजल्ट था ना ये. उस मेहनत को भी ड्रेन में फेंका और इस रिजल्ट को भी दिमाग में नहीं रखा. So equation of tangent at x1 y1 is going to be upon and how you are going to write the normal at x1 y1? Equation of normal at inverse हो जाएगा. क्या inverse हो जाएगा? हाँ, क्या inverse हो जाएगा? क्या inverse हो जाएगा? What was the equation of normal? What was the definition of normal? Normal was a line perpendicular to tangent at the point of contact,
Now, since you have already derived the equation of tangent, you can easily find out the slope of the tangent. And once you have found the slope of tangent, you know the condition of perpendicularity. If two lines are perpendicular, then the product of their slopes is -1. So you can easily find out the slope of the normal. And at the same time, you have already been given the point of contact. So the equation is going to be y minus y1 upon x minus x1 is equal to -1 upon slope of tangent. And slope of tangent is going to be minus x1 by a square divided by y1 upon b square. So if you divide minus x1 by a square into b square by, it will be replaced when you replace division by multiplication. So it will become b square by y1. So basically it is going to be minus x1 upon y1 into b square upon a square. That is the slope of tangent. And then you can again reciprocate it and replace negative sign with positive sign. You will get the slope of normal. What all things you need when you are writing an equation of a straight line? You need two things, a point and a slope. If any other information is given, you are going to use those information to find only two things, point and slope. Point and slope, point and slope, point and slope. Okay, now my second question is, if I have to find the equation of tangent at a cos theta comma b sin theta. Again, a cos theta comma b sin theta, we are going to apply t is equal to 0. And then when we apply t is equal to 0 at x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, then x square is replaced by xx1. Here x1 is a cos theta. So it is going to be x a cos theta upon a square. A will cancel out a square. It will become x cos theta upon a plus y square again be replaced by y1. That is going to be y into b sin theta upon b square. B and b square will be cancelling one of the power of b square. So you will be getting y sin theta upon b is equal to 1. This is going to be the equation of tangent of ellipse at any point called theta, where theta is a cos theta comma b sin theta, and theta is the angle made by the line joining center and the reflection of point P on the major auxiliary circle with positive x axis. So is it difficult to understand these things? You have to get yourself engaged, you have to get yourself, okay. Then only you will be able to derive it. You people are not at all studying, and it is one of the most serious topic going on, and you are not at all studying. Should I wrap it off? Huh? Okay. So okay, this is the equation of tangent. Is it right? Okay. Slope is going to be of tangent is going to be minus cos theta upon a into
sine theta upon b, which is going to be minus b by a cot theta, right? Then the slope of normal is going to be a upon b tan theta. Cot theta का reciprocal tan theta, and minus would be replaced by plus. Now equation of normal at it is going to be y minus b sine theta upon x minus a cos theta is equal to a by b tan theta. Simplify to get your answer. B will get there crossed and x minus a cos theta will go on the right side, right? So you will get something like by minus b square sine theta is equal to ax tan theta minus a square sine theta. If you see, if I rearrange it, I'll say ax tan theta minus by is equal to a square minus b square sine theta. True or false? True? Okay. Ax sine theta minus by cos theta is equal to a square minus b square sine theta cos theta. हाँ कहाँ पे बेटा? यहाँ पे cos थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है? ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी मिस्टेक. ठीक है, इट्स ओके हो जाता है. ओके ठीक है, ax sin थीटा माइनस by cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin थीटा cos थीटा. ओके, बट गुड थिंग दैट यू आर डूइंग ऑन योर ओन, दैट इज इंपॉर्टेंट. करते रहना चाहिए, तभी आपको कभी कभी मुझसे भी गलती होता है, आपसे भी गलती होता है, राइट? सो इट्स नॉट अ बिग डील. अब इसको मैं sin थीटा cos थीटा को मैं इधर ले आ सकता हूँ, तो क्या बन गया? This is your equation of normal at a cos theta comma b sin theta. Should I rub it off? Okay. What was the condition of tangency
for y is equal to mx plus c becoming tangent to x square plus y square is equal to a square. क्या था? When did y is equal to mx plus c turn out to be the tangent for x square plus y square is equal to a square? कब y is equal to mx plus c tangent बन गया था x square plus y square is equal to a square का? अरे condition of tangency circle chapter on a very first lecture. When does this is a circle, this was your line, this was your line. When was y is equal to mx plus c turning out to be tangent? This year 3 questions were asked on condition of tangency and you are not able to recollect what I told you about condition of tangency. Good. Y is equal to mx plus minus कैसे आता है ये रिजल्ट? फिर क्या करेंगे? पुट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. तो कंपेयर करके तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है. सी की वैल्यू कैसे आएगी? वही तो पूछ रहा हूँ. what theory you are going to apply? Discriminant. Discriminant should be, why discriminant should be 0? It is touching at only one point. If the discriminant is positive, it means the line is a chord. The secant is a chord. If the line is touching, discriminant 0 का मतलब they are just touching. And if the line is outside, what does it mean? Discriminant is negative. Negative. In circle you have one other condition also कि आराम से मैं इसको center from distance पे ही काम कर सकता हूँ, C निकाल सकता हूँ, right? But it is only given in, it is only true for circle. But for other we have to apply the concept of discriminant. Okay. Similarly, y is equal to mx plus c is tangent to y square is equal to 4ax. Then y is equal to mx plus क्या होगा? निकालो condition of tangency for y is equal to mx plus c and then you find the condition of tangency for दोनों की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालो. निकालोगे तो याद रहेगा. ये जमा नहीं हुआ था. हाँ, क्यों जमा नहीं हुआ था? क्या 2ax by m? देखो कुछ मिस्टेक किया होगा. सिर्फ a by m आना चाहिए. See, when you have parabola and this is your line y is equal to, let's see, it is just touching your 4x. It means the discriminant of the quadratic equation derived would be 0 because it will have only two equal roots, right? So if I am going to replace y by mx plus c in this equation, I am going to get mx plus c whole squared is
4ax, right? This is the quadratic equation I'm going to arrive. And if I expand it, I'll get m square x square plus 2cmx plus c square. Now rearranging, I'll get m square x square plus 2cm minus 4a x plus c square is equal to 0, right? Okay. Now the discriminant should be 0. So what should be the discriminant? 2cm minus 4a का whole square, that is 4cm c square m square plus 16 a square minus 16 acm. b square should be equal to 4ac, 4 m square c square. This and this gone, you are left with a square is equal to acm. 16 and 16 gone, right? So c is equal to a by m. C is equal to a by. So देखो, unlike in circle or in ellipse, you will get two tangents of the same slope. That is why you get here plus minus, right? But in parabola, you won't get two tangents of same slope. You will always get only one tangent of one slope, and that is equal to. समझ में आया? अरे आपको पता है ना, सारे पॉइंट का जो टेंजेंट होता है, वो जो स्लोप होता है किसी भी टेंजेंट का पैराबोला में 1/t होता है. 1/t मतलब सबका यूनिक स्लोप होगा, तो कभी कोई ऐसा टेंजेंट नहीं बनेगा जिसका दो पैरेलल टेंजेंट्स बने. इसलिए यू आर गेटिंग सी एज ओनली वन. यहाँ पे सी कितने आए थे? 2. यहाँ पे सी आए. देखो ये सर्कल है, अगर ये एक टेंजेंट है तो इसी पैरेलल पे एक ये भी टेंजेंट है ना. एलिप्स है, अगर ये टेंजेंट है तो इधर पैरेलल टेंजेंट्स है ना. बट इन पैराबोला दिस इज नॉट द केस. ओके, कर देता हूं, फिर से लिख देता हूं. आपको पता है, यहां से मैं लिख रहा हूं, आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, then only that line would become tangent. Now for finding the discriminant, what you are going to need? This is the coefficient of x, that is called b. b square minus 4ac. So b square is going to be 2cm minus 4a का whole square minus 4 into a क्या है? m square. वो क्या है? c square is equal to 0. समझ में आ रहा है? Now sorting it out, you will get 4c square m square plus 16 a square minus 16 amc minus 4m square. So you will get a square is equal to amc, c is equal to a by m, right? Similarly, try to find for ellipse. Right? This is the equation of ellipse, right?
and y is equal to mx plus c is the tangent. Now I am going to replace y by mx plus c. b square x square plus a square into mx plus c का whole square is equal to a square b square. ठीक है, नहीं समझ में आया? आ गया? ओके. नो एक्स स्क्वायर को मैं सारा एक साथ लिख रहा हूँ. एक्स स्क्वायर, इसके डेफिनेटली क्या निकल के आएंगे? एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वो ए स्क्वायर के साथ जाएगा तो उल्टा कर दे. बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, इतने ही एक्स स्क्वायर होंगे, इतने ही एक्स स्क्वायर होंगे. अच्छा, एक्स कितने होंगे? 2a स्क्वायर एम सी, राइट. और कांस्टेंट कितने होंगे? राइट. लिख दिया हमने, ये इक्वेशन रीअरेंज कर दिया. डिस्क्रिमिनेंट शुड बी बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0, विच मीन्स बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4ac. बी स्क्वायर क्या हो गया? 4 is equal to 4 b square plus a square m square into a square c square minus a square b square, right. 4 और 4 cancel, a square and this will become a square, right, है ना. so क्या हो गया? a स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, अब c स्क्वायर इसके साथ जाएगा तो b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस b टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर एम स्क्वायर. ठीक है, क्या क्या कट गया? b स्क्वायर सब पे बैलेंस आउट हो जाएगा. So you will be getting c square is equal to b square plus a square m square. So you are going to see as plus minus under root a square m square plus b square. सर्कल का क्या था? a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था सर्कल, और इसमें क्या हुआ? सिंपली a स्क्वायर एक का रिप्लेस हो गया b स्क्वायर से, है ना. और कॉमन सेंस से बताओ हाइपरबोला का क्या होगा? यही हाइपरबोला और एलिप्स में क्या फर्क है? एक है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और तो बी स्क्वायर इज रिप्लेस बाई, तो प्लस बी स्क्वायर बदले माइनस बी स्क्वायर. तुम जितनी भी रिजल्ट्स एलिप्स के निकाल रही हो उसको अगर माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर देती तो क्या आता है? वो हाइपरबोला के रिजल्ट्स हो जाते हैं. ठीक है, never forget these type of results, these are very important results. चलो बेटा, find center, length of axis and eccentricity of this ellipse. हाउ टू फाइंड, तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत होगी. कैसे करें स्टैंडर्ड फॉर्म में? I see here 2x square.
and I see here minus 4x, which means 2 into x square, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे, +1 कर दिया, ठीक। अच्छा, इसको +4 करना होगा, ठीक, और कितना कांस्टेंट था, 13। सो दिस हैज बिकम 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट, विच मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 बाई √2 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 बाई √3 का, is it a standard ellipse? Forget about x minus 1 and y minus 2. Tell me in terms of a square and b square, is it up? Yes, it is, right? No problem in it. So, जो बड़ा वाला है उसको कैपिटल x और जो छोटा वाला है उसको कैपिटल y. x स्क्वायर अपॉन 1 बाई √2 का प्लस वाई स्क्वायर अपॉन is equal to, this is the equation of your ellipse. Now tell me center क्या होता है इस ellipse का, स्टैंडर्ड ellipse का सेंटर क्या होता है, 0,0. लेंथ ऑफ एक्सिस क्या होता है, 2a. 2a. And what is the length of minor? 2b. And what is the eccentricity? छोटा स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ा स्क्वायर इंटू 1 माइनस, व्हाट इज बड़ा स्क्वायर, छोटा स्क्वायर 1/3, एंड व्हाट इज बड़ा स्क्वायर, so 1 minus e square is 2/3, which means e square is 1/3. E square is 1/3 मतलब e is 1/√3. E is equal to 1/√3. अच्छा, e तो चेंज नहीं करेगा, है ना। अब हमें आंसर बताना है, लेंथ ऑफ एक्सेस भी चेंज नहीं करेगा, तो हमें सिर्फ दो चीज निकालना है, एक ही चीज बच गया, क्या हो जाएगा, 1,2. अंडरस्टूड। What's the question? Foci. Whose foci are? Whose foci are 2, 3 and -2,
and semi minor arc is of minor axis is of length √5. स्टोरी कुछ ऐसी है कि स्टोरी कुछ ऐसी हो गई कि ये आपका फोकाई है, क्या लेन दे रखा है, एंड पॉइंट्स क्या दे रखा है, -2,3। ये हम रफ डायग्राम बनाते थे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि किधर लेफ्ट है क्या राइट है, वो देखना नहीं होता, राइट। और ये √5 है, ये √5 है, ओके। योर ellipse is something like this red is your ellipse, right? What two things you need for writing an ellipse? You need directrix and foci. You need directrix and foci. Now, this length, अगर आप स्टैंडर्ड एलिप्स पे होते हैं तो इसे ए ही कहते हैं और इसे बी कहते हैं, राइट। इसका सेंटर आप तुरंत प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्या होगा 0,3, 0,3। ये जो लेंथ है ए आपने तुरंत प्रेडिक्ट कर लिया, राइट। रॉन्ग, b square is already given as 5 and a square e square is already given as a square e square क्या दे रखा है 4। So a square minus a square e square is 5. So a square minus 4 is, so a square is 9. A square is 9. So a is basically 3. मैंने उल्टा बना दिया ये, इट इज आर एलिप्स है ना, ठीक है, बी से पास करेगा ना, ठीक है, ओके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए 3। सो दिस इज 0,3, this is 3 and this is 3. So definitely this is going to be 3,3 and this is going to be -3,3. So definitely you can think of your directrix, you can think of your एक्सेंट्रिसिटी, बताओ क्या है, a by e 2/3 is your eccentricity. A by e is the distance of directrix from the center and a is already 3, 9/2. So distance from vertex is 9/2. So this is 3,3. So definitely ये क्या होगा 9/2,3. This is 9/2,3. You got foot of directrix,
You got your foot of directrix? You know the slope of this line, so you can find the slope of directrix. Acha, what is the slope of this line? It's 0. The slope is, गौर से देखो, the slope is 0. So ये क्या हो गया? 90 degree, which means x is equal to 9/2. X is equal to, so any moving point P, PF upon PM. Now can you find the equation of ellipse? कैसे? हाँ वैसे भी तुम, नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं आई थी. आपको फिर लिखना होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये होता, ठीक है. बट इट वाज अ स्पेशल, इट वाज एन इजी केस वेयर यू हैड समथिंग लाइक y इज इक्वल टू 3. हैड इट बीन एनीथिंग अदर तो प्रॉब्लम आ जाता. तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या चीज चाहिए होता है? यू नीड डायरेक्ट्रिक्स एंड देन यू नीड फोकस और उसका कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स. ये दोनों अगर आपको मिल जाएगा तो आप इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख सकते हैं. क्या होता है इक्वेशन ऑफ एलिप्स? पी एफ इज इक्वल टू ई इंटू पी एम. ठीक है, समझ में आया? एक और डेफिनेशन है एलिप्स का, वो अभी मैं आपको बताता हूं. श्योर अ बिट ऑफ, तो एलिप्स का या पैराबोला के चैप्टर्स में आपको उसके कंपोनेंट्स के बारे में पता है तो आप ब्रेक कर करके पहुंच जाएंगे रिजल्ट पे, राइट? आपको सारे डेफिनेशंस क्लियर होने चाहिए. Sure, a bit of. आप एक्स एक्सिस पे नहीं थे कि ए और बी निकाला और काम चल गया, ठीक है? ठीक है, दिस इज F1, दिस इज F2. This triangle is called focal triangle. What is it called? Focal triangle. फोकल ट्रायंगल बनता है दो फोकाई एंड वन ऑफ द मूविंग पॉइंट. जस्ट टेल मी व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ PF1. डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहिए या डायरेक्ट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स का कॉन्सेप्ट. सो a cos थीटा b sin थीटा. अभी फॉर अ टाइमिंग तुम इसको x1 y1 ही रखो, x1 y1 ही रखो. बताओ इसका डिस्टेंस PF1 का क्या होगा? दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स, x equal to, so what is this distance going to be? A by E minus, so this is going to be E into, right? Similarly,
This is going to be your another foci, directrix minus a by e, and this distance, what is this distance going to be? x1 plus a by e, x1 plus, so this distance is going to be e into, right? Now tell me, so you got pf1 and pf2 दोनों मिल गया. Now tell me pf1 plus pf2 क्या है? E times of the distance between the directrix, you can say. And what is the distance between the directrices? 2a by e, so 2a. Or you can say directly, इसको ऐड कर दो ex1 plus a minus ex1. ex1 कट जाएगा, क्या बना? Which is a constant. Which is a constant. See, you are when I say focal triangle, I am just going to create a triangle whose foci are f1 and f2, and then you have a point on a curve. So you have got pf1, f2. This is your focal triangle. Now when you have to find the distance of pf1, it is basically e times the distance from directrix, and you know the directrix, it is just a parallel distance, आप दिखा सकते हो. And similarly, this is a by e minus x1, and this is x1 plus a by e, and e times of this distance is focal radius, and e times of this distance is focal radius. We have already defined eccentricity as focal radius upon director radius, huh? And focal radius is basically e into direct radius, right? And direct radius is nothing but distance from moving point from directrix. और आपको पता है directrix is a x is equal to constant line. तो आपको सिंपल एब्सिसा से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट योर डिस्टेंस. सिंस यहाँ पे इसका एब्सिसा ज़्यादा तो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंस यहाँ पे इसका एब्सिसा ज़्यादा तो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे. और आपको ये भी पता है कि ये डिस्टेंस इज बेसिकली 2a अपॉन e, 2a अपॉन, and if e times that is 2a, so pf1 plus pf2 is equal to 2a. This is the another definition of ellipse. So what is the definition of ellipse? Ellipse is a locus of a point such that ellipse is the locus of a moving point such that its sum of its distance from two fixed point is constant. आपको याद होगा, आप जब क्लास 6 में थी, ज्योग्राफी की क्लास में प्लैनेट से सब पढ़ रही थी, तो आपको एक एक्टिविटी था जिसमें आपको एलिप्स ड्रॉ करना था. एंड व्हाट दे हैड रिटन कि आप दो पिन लो, दो पिन को वो कर दो, एक रबर बैंड लो या एक फिक्स लेंथ का स्ट्रिंग लो, और एक पेंसिल की तरफ आप एज लॉन्ग एज यू कैन मूव योर पेंसिल विद दैट ट्रायंगल, यू विल ऑलवेज क्रिएट एन. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? आपने किया है एक्सपेरिमेंट, है ना? यहाँ पे एक पिन, यहाँ पे एक पिन, और एक फिक्स लेंथ का थ्रेड बना दो, क्योंकि ये भी तो फिक्स्ड ही है ना. एक्सेंट्रिसिटी अगर कांस्टेंट कर दो तो ये लेंथ क्या है? 2a. What will be the perimeter of this focal triangle? 2a into 1 plus e. 2a into 1 plus e. And what will be the area of this focal triangle? Half into y1 into 2a. y1 could be b sin theta. y1 is nothing but b sin theta, na? So you can say the answer is area of triangle, focal triangle is going to be y1ae, which is abe sin theta, abe sin theta है, ठीक है? Okay, understood? So this is one of the important definition of ellipse. So if you have to say that
some locus given, two fixed points are given, and the sum of the distance is constant, it means he's talking about ellipse. ये बड़ा बोर्ड आया था, वो लगा नहीं अभी तक? किस लिए आया, वैसे दिखाने के लिए? क्या रखा हुआ है? क्यों रखा हुआ है कर्टन के पीछे? This is the point of contact, okay? You have to prove that if there is a tangent at P, there is a tangent at, and the portion of tangent intercepted by the directrix, the portion of tangent intercepted by the directrix makes 90 degree at foci, makes, ये आपको prove करना है. How do we prove that any two lines are perpendicular? Use the concept of slope. And do you know the equation of tangent at P? What is the equation of tangent? X cos theta upon A plus y sin theta upon B is equal to 1. And what is the equation of directrix? A by E. So if I call it P, I call it M, I call it N. Can you find M? Can you find N? फर्स्ट एक ट्रायंगल प्रूव करो, वो अपने आप सिमेट्री से वो प्रूव हो जाएगा. Do you know the slope of PF1? Can you find the slope of PF1? This is AE comma 0, right? This is x is equal to A by E. This is x is equal to minus A by E. This is minus AE comma 0. Can you find the slope of PF? Can you find the slope of F1M? F1M. M निकाल सकती हो? T is equal to 0 से तुमको ये tangent पता है, और ये x is equal to A by E है. जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे क्या लिखना है? M का एब्सिस आपको पता है. पुट कर दो एब्सिस, गेट योर ऑर्डिनेट. बताओ क्या, प्रूव करो, जल्दी करो. इट्स जस्ट अ 1 मिनट क्वेश्चन. सारा बता तो दिया मैंने. और उस रिजल्ट से तुम देखोगे कि अरे द गाय इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सेंट्रिसिटी. सो इफ समथिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सेंट्रिसिटी, इफ आई रिप्लेस ई बाय माइनस ई, कोई फर्क पड़ेगा रिजल्ट पे? नो. अगर कोई रिजल्ट ई डालने पे फाइनल ई पे नहीं आ रहा है, ई पे डिपेंडेंट ही नहीं है वो, तो ई को अगर मैं माइनस ई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ई को मैं डबल कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. तो इसका मतलब है इसमें और इसमें क्या फर्क है? ई रिप्लेस बाय माइनस ई. सो आपको दूसरा करने की जरूरत नहीं है. आप कैन सिंपली से कि सिंस द रिजल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1 व्हिच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ई, देन दैट वुड आल्सो बी. अगर ई पे आंसर आता तो फिर आप नहीं बोल पाते, फिर आपको उसका माइनस ई पुट करके देखना होता.
ओके प्रूफ नहीं हुआ. नहीं हुआ. इतना टाइम क्यों लग रहा है? गॉड. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? x cos theta by a. इफ आई रिप्लेस x by a by e, क्या रिप्लेस कर दिया? a by e. a by e, तो a कट गया, क्या बचा? cos theta e. so b by sin theta into e minus cos theta अपॉन e, है ना? सो ये हो गया b अपॉन साइन थीटा इंटू m को मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, a बाई ई कॉमा b बाई ई साइन थीटा इंटू 1 माइनस इंटू ई माइनस कॉस थीटा. ठीक है, यही है. ओके, व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन? b साइन थीटा, b साइन थीटा अपॉन a इंटू ई, a cos थीटा माइनस ई, a cos थीटा माइनस, देखो e माइनस cos थीटा कट जाएगा उधर से. एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? b अपॉन e साइन थीटा इंटू ई माइनस cos थीटा अपॉन a by e minus ae, right? Huh? This and this gone with minus sign, sign gone with sign. ठीक. ओके, ऊपर आ गया माइनस बी स्क्वायर, नीचे आ गया ए स्क्वायर, ई अंदर घुस के बन गया 1 माइनस ई स्क्वायर. What is a square into 1 minus e square? b square. So their product is not dependent on e. So by symmetry I can say these two guys are also going to be perpendicular. Understood? Now I am changing just a little bit about. सबको समझ में आ गया ये? पक्का? Should I rub it off? Okay. Okay. This is tangent at major vertices. These are tangents at major vertices. This is your tangent at P, and MN. So MN is the portion of tangent at P intercepted. This is x is equal to A, this is x is equal to minus A. This is F1, this is F2. Now again this is 90 degree. Just a sec.
सॉरी, this is 90 degree and this is 90 degree. मतलब समझ आ रहा है? Portion of tangent intercepted between these two vertices would make 90 degree foci. ठीक है? Now you know this is now the question is what is m and what is n. अच्छा, एक को प्रूफ कर देंगे, दूसरा अपने आप प्रूव हो जाएगा, है ना? तो बताओ m क्या होगा, पहले बताओ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होगा? ये नहीं वो नहीं था, अरे वो तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए था ना, इसके लिए थोड़ी था। इतना क्वेश्चन ही डिफरेंट कर दिया ना मैंने, क्वेश्चन ही डिफरेंट कर दिया। ठीक है, व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ दिस टैंजेंट? x cos theta by a plus y sin theta by is equal to 1. What should be the coordinate of m? a comma a by e क्या है? ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये tangent है at vertex, कंफ्यूज हो रही बार बार। a ओके, एंड b निकालने के लिए इसको x को रिप्लेस करना पड़ेगा, so 1 minus cos theta b into 1 minus cos theta upon sin theta, right? और इसको रिप्लेस, ये क्या होगा? माइनस ए, तो वो उधर जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो हो गया माइनस ए इंटू बी इंटू 1 प्लस अपॉन, right? The slope of this line is going to be b into 1 plus cos theta upon sin theta and minus a minus a, so minus बाहर निकलता, minus a minus a, right? Into अगेन ये एज इट इज आ जाएगा, राइट? एंड a माइनस a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, एंड a माइनस, राइट? ओके, now 1 plus cos theta into 1 minus sin theta is 1 minus cos square theta, and sin theta into sin theta is sin square theta, so they are equal. Kuttum 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 kuttum. now ऊपर आ गया b स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर कॉमन निकल के आ गया, अब देखो क्या है, a common and then a minus a, अरे सॉरी माइनस, ये ठीक है, ये सही था, इसके साथ ले रहे हैं ना ये, ठीक है? सो माइनस बाहर निकल के आएगा एंड दिस विल बी 1 प्लस ई एंड दिस विल बी क्या? नहीं ये तो ठीक है ना, a माइनस ए, अरे एक ही F1 अभी ले रहे हैं, F2 अलग है, तब ना E को रिप्लेस करेंगे माइनस ई से तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? सो दिस इज 1 माइनस ई स्क्वायर, तो अगेन कट गया, बचा क्या? -1। समझ में आया? सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज।
अगर आपका डायरेक्ट्रिक्स से एक टेंजेंट बन रहा है तो जो इंटरसेप्ट बनता है, अगर इंडिविजुअल फोकाई पे आप अगर एंगल ड्रॉ करते हैं, उस मतलब इंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट एट डायरेक्ट्रिक्स से अगर आप फोकस पे एंगल बनाते हैं तो क्या बनता है 90 डिग्री बोथ वेज, राइट। और अगर आप डायरेक्ट्रिक्स को और अंदर की तरफ क्लोज करते हो, वर्टेक्स पे लेके टेंजेंट बनाते हो, तो जो पूरा इंस्क्राइब्ड होगा, जो भी इंटरसेप्ट होगा, वो हर एक फोकाई पे कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। उस केस में बस इतना फर्क था कि पी एफ से बन रहा था, राइट। इसमें ये पी नहीं रोल प्ले कर रहा है, व्हाट इज बीइंग प्लेड इज बाय दिस, ठीक है। These two questions which we discussed right now were JE question, IIT JE questions. Sure a bit of? So these two questions are IIT JE and not a difficult questions, right? If you understand it. It's a myth that IIT JE के questions सारे difficult होते हैं. Of course, 3-4 questions वैसे होते हैं. But the idea is when you are appearing in IIT JE examination or any examination which has competitive and very difficult, the idea is not to solve difficult questions. The idea is to pick the easy ones and solve it. Many people, what happens with them? They get tangled with all the questions. And once they start, पहला ही 5 क्वेश्चन में tangle हो गए. पहला 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट था, उसी में tangled हो गए. आसान क्वेश्चन का बंडल बीच में पड़ा हुआ है कहीं. उस बंडल तक पहुंचना होता है, इसलिए क्या कहते हैं यू हैव टू फर्स्ट सी बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. व्हेनेवर यू अपीयर इन एग्जामिनेशन यू हैव 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. वन इज सिटिंग डक्स एंड द अदर इज हार्ड नट टू क्रैक, कभी नहीं होगा. वन एंड सिटिंग डक्स ऐसे तुरंत हो जाएगा, टक 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 टक. लेकिन सिटिंग डक्स कभी कभी डेंजरस होते हैं, है ना, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द सिटिंग डक्स. फिर उसके बाद बीच के जो 2 है, एक होता है आइस कि हीट देंगे तो मेल्ट कर जाएगा कंप्लीटली, और एक होता है आइसबर्ग, वो तुमको बर्बाद कर देता है, ठीक है. तो ये सब, तो पहले क्या कहते हैं हमेशा आपको 5 मिनट टाइम देना चाहिए पेपर को, एक से लेके आखिर तक, ठीक है. एक साथ आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देते हो तो आप देख लो कौन कम टाइमिंग है, उसको आप पहले कर लो. नॉर्मली बच्चे इस केमिस्ट्री पहले करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेशंस नहीं होता है. फिजिक्स एंड मैथ्स इज लिटिल एग्जॉस्टिव. फिजिक्स और ज़्यादा इंटैंगल करता है, मैथ्स देखते ही पता चल जाता है होगा कि नहीं होगा. मैथ्स के साथ ये चीज़ तो है अच्छा, ठीक है. फिजिक्स के साथ ऐसा लगता है कि हो जाएगा इक्वेशन, तो फिजिक्स ज़्यादा डेंजरस हो जाता है ना. So again, you have a directrix, you have an ellipse, and then you have a directrix. X is equal to, and then you are drawing a tangent at P, cutting the directrix at Q. This is P, this is Q, and let's call it M, and it is making angle alpha, and here it is F, and this is making angle beta. Okay. आपको शो करना है इस की एक्सेंट्रिसिटी cos बीटा अपॉन cos अल्फा है. अपॉन cos अल्फा. eccentricity of this ellipse is, आप P पॉइंट पे ये बना रहे हो बीटा, राइट. दिस इज F, दिस इज Q. आपको प्रूफ करना है एक्सेंट्रिसिटी क्या है इसकी. एक बात बताओ,
since we don't have much time. ये एंगल क्या होगा? 90. This is 90. And this is 90. If this is alpha, this is alpha, right? Okay. What is PF? PQ. And what is PM? हो गया, इतना आसान क्वेश्चन था ये. E is PF upon PM. E is nothing but PF upon, so PQ cos beta upon PQ cos alpha. ठीक है. सो लास्ट क्वेश्चन का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो अगर हमें नहीं पता होता तो हम बर्बाद हो जाते हैं. बर्बाद नहीं होते, ज़्यादा टाइम लगा देते हैं. आप टैंजेंट इमेजिन करते, फिर एग्जाम में आप डिराइव करते, 5 मिनट लगाते इस क्वेश्चन में ये सब करके पता करने में, और वो भी आप हौच पौच होकर ये भी डिराइव नहीं कर पाते क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि कोई लिंक है ऐसा. समझ में आ रहा है? Okay, let's try to find the director circle. Director circle होता क्या है? अच्छा, what is the director circle of this? क्या होता है इसका director circle? What is the definition of director circle? Tangents are, if you draw two tangents, if two tangents are making 90 degree from outside, then the locus of that moving point is called director circle. In case of circle, director circle is the same circle concentric with it and root 2 times the radius, right? And what was director circle for y square is equal to 4ax? What was the director circle? Directrix was the director circle, right? Now the question is, what is the director circle for x square by a square plus y square by b square is equal to 1? Since you know कैसे निकाला था हमने सर्कल का डायरेक्टर सर्कल? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था m में और फिर कहा था m1 इंटू m2 इज -1. तो अगर आप का टेंजेंट है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक, तो अब बनाइए क्वाड्रेटिक इन m. क्या बनेगा? सी बाद में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, नो इशू. क्या बनेगा? और यू कैन सी डायरेक्टली दैट सी स्क्वायर क्या होता है? प्लस माइनस sorry a square m square plus b square. This was the condition of C, right? So आप अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे तो इट इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू mx प्लस ले लो
प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ठीक, ये आपका टेंजेंट है। ये टेंजेंट आप कहां से बना रहे हो? h कॉमा k से। सो h कॉमा k मस्ट सेटिस्फाई दिस। h आपका डायरेक्टर सर्कल क्या है? लेट द मूविंग पॉइंट बी h कॉमा k। सो h कॉमा k पे ही ये लाई कर रहा होगा। सो आई कैन राइट k इज इक्वल टू राइट। सो आई कैन से k माइनस mh का होल स्क्वायर इज right, this is your quadratic in M. Okay, let's open it up. K square plus M square H square minus 2MHK is equal to A square M square plus, rearranging it, M square common ले लिया, क्या बन गया? H square minus A स्क्वायर, फिर m कॉमन ले लिया, माइनस 2HK m, राइट। और कॉन्स्टेंट्स क्या हो गए? k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m. You will get two m's always, which is passing through h comma k. h comma k से हमेशा दो tangents बनेगा, right? These are the two tangents. Now what you want? These two tangents to be, which means m1 into m2 should be, and what is m1 into m2? Product of roots, which is going to be k square minus b square upon h square minus a square. आपको पता है quadratic equation का product of roots होता है c by a, so the same concept is equal to minus 1. So I got k square minus b square is equal to h square minus, this is the locus. I can replace k by y and h by x. So rearranging it, what I'll get? Y square minus b square is equal to minus x square minus a square, right? If I replace it this way, this will become x square plus y square is equal to a square plus, this is going to be your director circle. Understood? समझ में आया डायरेक्टर सर्कल क्या हुआ? अगर तुम डायग्रामेटिकली बताओ तो इसका रेडियस क्या है? Under root a square plus b square, and what is the area of this director circle? Pi into a square plus pi into a square plus, what is the area of major auxiliary circle? What is the area of major auxiliary circles? What is major auxiliary circle? What is major auxiliary circle? अरे डायग्राम देखो, what is major auxiliary circle? हाँ, तो क्या होगा उसका एरिया? What is the equation of major auxiliary circle? क्या होता है मेजर एक्सिस सर्कल डायग्राम में? कहां से पास कर रहा होता है? सेंटर क्या होता है? तो रेडियस क्या हुआ? इक्वेशन क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा था? सो एरिया क्या होगा मेजर ऑक्सिलरी सर्कल का? पाई ए स्क्वायर। और माइनर ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? तो उन दोनों के एरिया को ऐड करो,
एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ डायरेक्टर सर्कल? सो दोनों का एरिया सेम हो गया. सो डायरेक्टर सर्कल का एरिया क्या होता है? मेजर ऑक्सिलरी सर्कल का एरिया प्लस you all forget. You don't understand basic. हैं बेवकूफ लड़कियां. अरे सिंपल है. This is your ellipse. This is your minor auxiliary circle, this is your major auxiliary circle, and this is your director circle. Understood? इसका सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू. So this area plus this area is this whole area. Then tell me what will be this area, this outside area. This would be equal to the minor auxiliary circle area. This area, यार मार्कर्स माशाल्लाह हो रहे हैं सारे. देखो दिस इज योर वाओ. ठीक है. ये एरिया इज पाई b square and this area pi b square. This bigger circle is director circle. What is the equation of director circle? X square plus y square is equal to, and then this middle circle is major auxiliary circle, and this guy is minor auxiliary, and this guy is, thank God. ठीक है. So this is the story of your ellipse. So in the next class we'll continue further. Okay.